Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to share another subtopic, that is adaptation to light, and it is the subtopic of the fourth unit, that is ecological interactions and adaptation. तो आज हम बात करेंगे कि लाइट को कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. पहले हम देखेंगे कि so far as this light is concerned, it is considered one of the most important ecological factors, because it provides the energy to the whole biosphere, and this light enters into the biosphere through the process of photosynthesis performed by the green plants and other autotrophs. जहाँ तक इस लाइट का ताल्लुक है, द बोथ प्लांट्स एंड animals, they show different characteristics or characteristic features to the changing light conditions. पहले हम बात करेंगे adaptation of plants to light. Adaptation in plants. पहला पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि heliophytes and Zeophytes. So heliophytes and the zeophytes, these are the two categories of the plants which grow in the bright sunlight and the low or the dim sunlight. पहले हम देखेंगे heliophytes. They are popularly called as the sun plants because they are able to grow in the bright sunlight. इसी तरह जो zeophytes and these are those plants, these are popularly known as the shade plants because they are able to grow in the shade or in the dim light. तो जहाँ तक इन heliophytes and zeophytes का ताल्लुक है, they show different characteristic features to adopt themselves with the bright light or with the dim light. तो पहले हम देखेंगे कि heliophytes और zeophytes में क्या क्या characteristics हैं which enable them to live in these conditions. So far as the heliophytes are concerned, इनमें जो leaves होते हैं, leaves are arranged vertically, that means towards the sun. They are arranged towards the sun. They are arranged vertically but towards the sun. On the other hand, zeophytes में the arrangement of leaves is different, that is the leaves are arranged horizontally. तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें क्या है कि क्यूटिकल. जो heliophytes में क्यूटिकल होता है, that is thick. Heliophytes they possess the thick cuticle. On the other hand, zeophytes they possess the thin cuticle. तो स्टोमाटा की बात करेंगे. The heliophytes they possess the sunken type of stomata, while as the zeophytes they possess this sunken stomata is absent in case of the zeophytes. तो इसी तरह एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नंबर ऑफ ब्रांच इज मोर इन केस ऑफ द heliophytes and it is less in case of the zeophytes or the shade plants. तो इसी तरह एक और कैरेक्टर, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे, दैट इज रूट सिस्टम. तो यहाँ पे जो heliophytes and they possess extensive root system. On the other hand, zeophytes they possess very small and less developed root systems. तो ये रही बात regarding the heliophytes and the zeophytes. Another important feature in case of the plant stores the light is the process of the photoperiodism. फोटो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द फोटो पीरियड. Photo period, it represents the duration of daylight. It represents the duration of the daylight. मतलब daylight की कितनी duration होती है. क्या
ये 12 आवर्स से ज़्यादा होती हैं, 12 आवर्स से कम भी हो सकती हैं, या 12 आवर्स की ही होती हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो फोटो पीरियड दिस रिप्रेजेंट्स द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट ड्यूरिंग द डे। अगर हम क्रिटिकल डे लेंथ की बात करेंगे, critical day length it is considered as a 12 hours critical in a 24 hour clock। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो दिस इज सपोज 6, 12, 18 एंड 24, तो यहाँ पे जो मतलब 12 आवर्स का हम लेते हैं उसको हम क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं। क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है कि जो ये फोटो पीरियड्स हैं दे हैव द इफेक्ट अपॉन द जर्मिनेशन ऑफ seeds as well as flowering of the plants, and this process, this phenomena of effect of the photoperiods upon the seed germination as well as on the flowering of the plants is called the photoperiodism. So far as this photoperiodism is considered, the plants have plants have been categorized into three main categories on the basis of flowering towards the different lengths of the photo periods। फोटो पीरियड के हिसाब से जो फ्लावरिंग होते हैं डिफरेंट प्लांट्स दे आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज नोन एज द शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। यहाँ पे जो द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स दैट occurs during when the length of the day or when the light exposure or when the हम ये कहेंगे daylight that remains less than the critical daylight, critical daylight length, यानी कि जो मतलब फोटो पीरियड यहाँ पे होता है दैट इज लेस देन द critical day length। जो critical day length that is less than 24 hours, यानी कि ये प्लांट्स अपनी फ्लावर्स को ब्लूम करते हैं और दे फ्लावर्स ओनली व्हेन दे रिसीव द लाइट which is less than 12 which is less than 12 hours day। तो इनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट्स में कैनाबिस एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज लॉन्ग डे प्लांट्स। These plants they flower when they receive the light or when they receive the photo periods which are more than the critical day length। That means these plants are only able to flower when they receive the light which is more than 12 hours। तो यहाँ पे इनको लॉन्ग डे कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल भी देंगे तो रेडिश एक एग्जाम्पल है, इसमें रेडिश की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसी तरह डे न्यूट्रल प्लांट्स, day neutral plants these are those plants while the photo periods the length of photo periods they have no impact upon the flowering at all। इसमें हम टमाटो की एग्जांपल दे सकते हैं। तो this is regarding the photoperiodism which is shown by the plants towards the light stimulus। तो इसी तरह एक और phenomena that is present, that is prevalent in the plants on the basis of their response towards the light, that is plant movements। Plant movements क्या होते हैं? Plant movements these are the movements which are induced by the light in the plants, and these are of different types। One is known as the phototaxis। Phototaxis these are those plant movements which takes in response to the intensity of light, whether the intensity is low or whether it is high।
तो यहाँ पे इस मोमेंट को हम फोटोटैक्सिस कहते हैं। एक और किस्म की जो मतलब प्लांट मोमेंट होती है उसको हम कहते हैं फोटोनॉस्टिक मोमेंट। Photonostic moments are those plant moments which are shown in response to the मतलब ये भी मतलब जो लाइट होते हैं, हम ये कहेंगे फोटोनॉस्टिक प्लांट मोमेंट्स आर द नॉन डायरेक्शनल मोमेंट टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस। तो इसी तरह एक और टाइप की मोमेंट होते हैं, दैट इज फोटोट्रॉफिक मोमेंट। Phototrophic moments are these are the directional moments which are shown towards the towards the light stimuli. तो ये directional होते हैं, whether the plants may grow towards the light or they may grow out the light. Accordingly, they may be positive phototropic or negative phototropic. So this is regarding the plant movement. तो एक और important phenomena which is shown by the plants towards the light, that is known as a stratification. What is stratification? This layering or zonation of the different sizes of the plants. Particularly it is more prevalent in the forest. In forests what we see, there are present almost 3 to 6 layers of the plants. For example, tall plants followed by medium-sized plants, followed by short-sized plants, and then shrubs, herbs, and ultimately by the grasses. तो यहाँ पे एक zonation बनती है, एक strata सा बनता है, एक layering सा बनता है plants की, उसी को हम stratification कहते हैं. This is also in response to the light. This stratification, it occurs in the forest. This is another important characteristic which is shown by the plants towards the. इसी तरह इस लाइट का इम्पैक्ट रहता है अपॉन द फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स इज आल्सो मतलब इफेक्टेड बाय द लाइट। इस तरह फ्रूट फॉर्मेशन पे भी लाइट का इम्पैक्ट रहता है। एंड अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन इज आल्सो इफेक्टेड बाय द लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ सीड जर्मिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट, मतलब on the basis of seed germination, on the basis of response of seed germination towards the light, seeds have been classified into 3 categories. One is known as the non-photoblastic seeds, another is positive photoblastic seeds, and the other category is the negative photoblastic seeds. तो ये रही बात रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ लाइट अपॉन द फ्लावरिंग फ्रूट्स एंड द सीड जर्मिनेशन। तो इस तरह अगर हम कहेंगे कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में या स्टोमाटा की डेवलपमेंट में भी इसका रोल रहता है, किसका? लाइट का। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है। नाउ ये रही बात द एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट, द एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एडॉप्टेशन of animals to light. एनिमल्स में अगर हम बात करेंगे, जो एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स आल्सो रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स द लाइट। पहले अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, द ब्रीडिंग एक्टिविटी ऑफ द एनिमल्स इज आल्सो इफेक्टेड बाय द लाइट। Accordingly, the plants have been categorized or divided into 3 main categories. One is known as the short day animals. Short day animals, they show their breeding activities in short photo periods. For example, sheep and goats. इस तरह long day animals, ये वो animals होते हैं which just show their breeding activities in the long photo periods. अगर हम इसमें एग्जांपल टर्की है बेस्ट एग्जांपल। इस तरह अगर हम देखें डे न्यूट्रल एनिमल्स, ये वो प्लांट्स द लाइट हैज नो इम्पैक्ट अपॉन द ब्रीडिंग एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल रैबिट की दे सकते हैं, रैबिट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। इस तरह पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, जहाँ तक पिगमेंटेशन का ताल्लुक है,
in case of the human beings, they show the tanning, skin tanning. When their skin, it remains exposed to the sunlight for the prolonged time. So at that time, there occurs the skin tanning. There occurs the skin becomes the darken in color. This is because due to the secretion of the melanin, which protects the skin from the harmful effects of the ultraviolet rays. तो इसी तरह कुछ animals they actually they show the coloring which is resembling to the background, to their background where they are living. That is the defensive mechanism serving there. तो यहाँ पे एक और मतलब दे रही बात पिगमेंटेशन की. तीसरा इसका जो इम्पैक्ट है that is period of activity, periodic activity या period of activity. Different animals they are active at the different times of the day. Some most of the animals they are active during the day, which are known as the diurnal animals. So some animals they are active during the night. They are known as the nocturnal animals like कोल हैं. तो इसी तरह कुछ animals they are active in the TV light, which are known as the crepuscular animals. Rabbit इसमें आ सकता है. तो कुछ animals they are active at the dawn, उनको हम aerular कहते हैं. Some animals they are active at the dusk, जिनको हम कहते हैं vesperal animals. So this is regarding the periodic activity which is shown by the animals towards the different stages of the day, or towards the different towards the different intensity of the light in a day. तो एक अल्टीमेटली मैं इस एक लॉ है जिसको हम विलिजर्स लॉ कहते हैं. Villager's law, it is a law which states that the animals which are living in hot and humid conditions, they also possess, they are darker in color. On the other hand, the animals which are living in the cool and the cool and the dry conditions, they are lighter in color. This is what Villager's law states, and this is all regarding the effect of light or the adaptation of animals and plants towards the light, or impact of light on the plants and the animals. Inshallah, आज यहाँ पे ही हम conclude करेंगे. Inshallah in the next topic we will proceed ahead. Till then, fi amanillah.